Hi all. So today we will start with data abstraction in DBMS. So in last lecture हमने पढ़ा था types of schemas और schema क्या होता है वो भी पढ़ा था. तो उसमें data abstraction का concept आया था. Now we will study data abstraction in detail and the types or levels of data abstraction. Now, database systems are made up of complex data structures. To ease the user interaction with database, the developers hide internal irrelevant details from user. This process of hiding irrelevant details from user is called data abstraction. तो uh, जो database developers होते हैं वो irrelevant या फिर sophisticated coding information जो होती है वो यूजर से हाइड करते हैं ताकि यूजर्स कोई भी ऐप या वेबसाइट के थ्रू कंफर्टेबली डेटा के साथ इंटरेक्ट कर सके और उनको नेसेसरी उनका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल सके. तो ये प्रोसेस को डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है. नाउ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन 3 levels ऑफ ANSI स्पार्क डेटाबेस सिस्टम. सो ये क्वेश्चन इट इज नथिंग बट एक्सप्लेन 3 levels ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. So the 3 levels are external level, conceptual level, and internal level. So you can also draw this diagram and give your answer in the exam of GTU. तो इंटरनल लेवल होता है वो लोएस्ट लेवल होता है जहाँ पर डेटा फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है. कंसेप्चुअल लेवल पे टेबल्स, व्यूज, रिलेशंस वगैरह होते हैं और सारे कंस्ट्रेंट्स और किस टेबल में क्या कौन से टेबल में क्या क्या रिलेशन है वगैरह सब. और एक्सटर्नल लेवल जो होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है जहाँ पर यूजर्स जो होते हैं वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं. यूजर्स मतलब कॉमन यूजर्स जो कस्टमर्स होते हैं वो. तो सिंस मल्टीपल यूजर्स होंगे तो व्यू ए, व्यू बी, व्यू सी इस तरीके से अलग अलग व्यूज रहेंगे. नाउ लेट्स सी देम in detail one by one. So one is internal level. So as I told, it is the lowest level of data abstraction. It describes how data are actually stored on storage devices, means physical storage devices. It is also known as physical level, and the internal view is described by internal schema. तो जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन जहाँ पर डेटा एक्चुअली फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस में कैसे स्टोर होता है वो सब आता है. जैसे कि एक्सटर्नल सर्वर्स और फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक HDD हार्ड डिस्क या SDD etc. Now we go to conceptual level. So as we saw in the diagram, this is the conceptual level. तो conceptual level एक next higher level है of data abstraction as compared to the internal level that we discussed previously. It describes what data are stored in databases and what relationships exist among them. It is also known as logical level. Conceptual view is defined by conceptual schema. It describes all the records and relationships. So as I told, ये लेवल जो है वो डेटाबेस में कौन से टेबल्स है, उन टेबल्स में क्या रिलेशनशिप है, कौन से कॉलम्स है टेबल्स में, कितने रिकॉर्ड्स रहेंगे, कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल लेवल में आती है. Now next, moving to next level, external level. So this is the highest level of data abstraction. It is also known as view level. It describes only part of the entire database that a particular end user requires. So end user will be working at external level to access the database application and get his or her requirement satisfied. External view describes the external view is described by external schema. An external schema consists of definition of logical records, relationship in the external view, and method of deriving the objects from conceptual view. This object includes entities, attributes, and relationships. So basically आप यही describe कर सकते हो. ये important points. Highest level होता है, also known as view level, and ये level पर end user work करता है.
and it is basically used to hide the complexity of code from the end user or client or customer. So these were the three levels of data abstraction. Okay, so in the next lecture we will discuss about data independence.